गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये थ्योरी भेज रहे हैं, इसको कॉपी में लिखेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड द energetically excited hydrogen atom produce emit electromagnetic radiation of discrete frequency. The hydrogen spectrum consists of several series of lines named after their discoverer. Balmer showed in 1885 on the basis of experiment observation that if नेक्स्ट इसके आगे लिखेंगे स्पेक्ट्रम लाइन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेव नंबर वी बार, देन द विजिबल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फार्मूला। वी बार 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर, वेयर n इज द इंटीजर इक्वल टू ग्रेटर देन 3, n इक्वल 3, 4, 5. The series of line described by the formula are called the Balmer series. The Balmer series of line are the only line in the hydrogen spectrum which appear in the visible region of the electromagnetic spectrum. लिख लेंगे, ये क्वेश्चन लिख लेंगे। बी बार इक्वल 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ 109677 पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट। इसमें लिखेंगे द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ line that correspond to n 1 2 3 4 5 are known as Lyman, Balmer, Pascal, Brackett and Ford series, जिसकी ये फ्रीक्वेंसी नीचे दी गई बनी हुई है टेबल। इसको लिखेंगे लाइमन अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद देखेंगे बामर विजिबल, पास्कल इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड और फुंड जो हमारा है वो भी इंफ्रारेड है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन। बोर वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द जनरल फॉर्म फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। ही यूज्ड प्लैंक कांस्टेंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिज्म। इट कैन still we used to recognize many point in the atomic structure and spectrum. Bohr model for hydrogen atom is based on the following postulate. The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. This part are called orbit. It is in which the state are allowed energy state. These orbits are arranged concentrically around the nucleus.
Second point, the energy of an electron in the orbit does not change with time. However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state, whose required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted while the electron move from higher stationary state to lower stationary state. इसके बाद देख लेंगे नीचे एंगुलर मोमेंटम. Just as linear momentum is the product of mass m and linear velocity v, angular momentum is the product of moment of inertia I and angular velocity omega. For an electron of mass me moving in circular path of radius r around the nucleus, angular momentum I omega, since I बराबर mr square and omega v upon r, where v is the linear velocity. Next point, the frequency of radiation absorbed or emit when transition occur between two stationary states that differ in energy by delta is given by nu equal delta E upon h, delta E बराबर E2 minus n, E2 minus E1 upon h, where E1 and E2 are the energy of the lower and higher energy. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, लिखेंगे द डिटेल रिगार्डिंग द deviation of energies of the stationary state used by Bohr are quite complicated and will be discussed in higher class. However, according Bohr theory for hydrogen atom. First point, the stationary state for electron are number n equal 1 to 3. This integral number known as principal quantum number. Second point, the radii of the stationary state are expressed as r बराबर n square a naught, where a naught 52.9 picometer. Thus, the radius of the first stationary state called the Bohr orbit. Next point, the most important property associated with the electron is the energy of the stationary state. It is given by the expression E equal minus r bracket में 1 upon n square, where r is called Rydberg constant and the value is 2.18 into 10 to the power 18 joule. 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. इसे कॉपी में लिख के ग्रुप में सेंड करें.